Good morning, students. Welcome back again. So, let's see the part 3 of your 12th chapter, which is aldehydes, ketones, and carboxylic acid. Okay. So, in this video, we are going to see the physical properties of aldehydes, ketones, and carboxylic acids, and also their in the physical properties जैसे कि उसका nature देखते हैं, we'll see the nature of intermolecular forces and boiling points and solubility. Okay, so and also we'll see the chemical properties of aldehydes and ketones, also carboxylic acid. Okay, so let's see the physical properties. In that first we'll see the nature of intermolecular forces, यानी कि जो कीटोन और एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल बॉन्ड रहता है, यानी कि सी और ओ के बीच में जो बॉन्ड रहता है, उन दोनों का जो मॉलिक्यूल्स यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो नेचर क्या है, इन दोनों का जो इंटर इंटर मतलब क्या है, जब दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों के मिडल वाला जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी फोर्स की वजह से बॉन्ड बनता है, जिसका नेचर हम लोग डिस्कस करेंगे इस नेचर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनका नेचर क्या है वो देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दी कार्बोनाइल बॉन्ड जो कि सी ओ के बीच में बॉन्ड है, अल्डिहाइड्स में हो या कीटोन्स में हो, इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर बॉन्ड यानी कि आसपास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है दोनों मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। सो the polar covalent bond in between these carbonyl bond of in the aldehyde as well as in the ketone. So by this, as the result of this, these compounds contains the dipole, यानी कि डाई मतलब दो पोल्स, ठीक है। डाइपोल सी डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहता है इन दोनों के बीच। तो जो ये मॉलिक्यूल्स है जो रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि दे हैव अपोजिटली पोलराइज्ड एटम्स, दे आर facing with each other. Here you can see the opposite charge are present. They polarized atoms. They are facing with each other. Okay, so carbonyl group of carboxylic acid, जो carboxylic acid में they contains OH bond जो जिसमें रहता है acid में, the bond they are responsible which are responsible for the formation of hydrogen bonding, ठीक है। तो thus this carboxylic acids have the strongest intermolecular forces of attraction, okay। So next one जो हम देखेंगे boiling points and जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और इसकी जो फिजिकल स्टेट है यानी कि वो दिखता कैसा है, उसका ओडर कैसा है, ठीक है, वो देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, जैसे कि अल्डिहाइड्स में फॉर्मल्डिहाइड जो है इट इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में फॉर्मल्डिहाइड क्या रहता है, गैस रहता है एंड हैज इरिटेटिंग ओडर। इरिटेटिंग एकदम जो मतलब एक लिटिल बिट इरिटेट होता है जिसकी स्मेल से, वैसा होता है, ठीक है। इट हैज द इरिटेटिंग ओडर एंड इट इज द गैस एट रूम टेम्परेचर, फॉर्मल्डिहाइड जो है। और whereas acetaldehyde is extremely volatile, ठीक है। acetaldehyde जो अगर एक बीकर में acetaldehyde डालकर रख देंगे and then after 10 minutes या after some times you see that it will completely evaporate, यानी कि volatile हो जाता है जब हम ओपन रखेंगे उसको, ठीक है। So acetaldehyde is extremely volatile and it is colorless liquid, okay। and higher aldehydes जो है they have the pleasant odor। जो हायर एल्डिहाइड्स होते हैं वो प्लेजेंट ओडर होते हैं। एसीटाइन जो एसीटोन जो है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर और उसका जो प्लेजेंट ओडर होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ हाईएस्ट कीटोन्स जो है and that higher ketones have bland odors, ठीक है, whereas the higher aldehydes have pleasant odor, ठीक है। so this is one more thing, listen students, जो boiling point जो increase होता है in homogeneous series of see, you can see the table number 4 that is listed of this series of aldehydes as well as ketones, जिसका increasing boiling point है। जैसे कि aldehydes में methanol ले लो जिसका boiling point है 252, और ethanol ले लो 294, and propanol ले लो 319, butanol is 348 Kelvin, pentanol is 374 Kelvin, hexanol is 392 Kelvin. See, the number of carbon atoms when it increases, its boiling point is also increasing. Okay, so
this is about the boiling point of aldehydes as well as ketones. Okay, so let's see the solubility of these two aldehydes as well as ketones. See here what happens in the solubility. The ऑक्सीजन एटम इन द कार्बोनाइल बॉन्ड में जो CO बॉन्ड में है कार्बन ऑक्सीजन एटम ऑफ दिस it can involve in the hydrogen bonding with the water molecule. You can see it involved in the water molecule. So as a result of this, the lower aldehydes और ketones जो है इसकी वजह से by this of result यानी कि जैसे you can see oxygen atom CO, these are involved. It can be the oxygen atom, it can involve in the hydrogen bonding जो कि water molecules में है. As a result of this, the lower aldehydes as well as ketones जो है they are soluble in water. Okay, so see one more thing that you have to know about this. The example for the lower aldehydes as well as ketones, they are water soluble, जैसे कि acetaldehyde, acetone हो गया, ये सब water soluble है. ठीक है. So you can see जैसे कि हमारा जो as this molecular mass increases, the portion of hydrocarbon part of this molecule is also increases, which cannot form hydrogen bond, and the water solubility क्या हो जाता है, decrease हो जाता है. जैसे जैसे जो molecular mass increase हो जाता है उसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो है वो भी इस मॉलिक्यूल में इंक्रीज होते जाता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता. इसकी वजह से जिसकी सॉलिबिलिटी हो यानी कि वाटर सॉलिबिलिटी हो, ये क्या हो जाता है, डिक्रीज होते जाता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द solubility, boiling points of aldehydes and ketones, and nature of intermolecular forces. Okay, so let's see the physical state, boiling point, and the solubility of carboxylic acid. Okay, so let's see that. So here the physical state of this carboxylic acid, it is very simple. It is a colorless liquid. See here, the lower aliphatic carboxylic acids है up to 9 carbon atoms, they are colorless with irritating odors रहता है. जो aliphatic carboxylic acids जैसे कि up to 9 carbon atoms जब present रहते हैं जिसमें, वो aliphatic carboxylic acid जिसका liquid जो है वो colorless रहता है और उसका जो odor है यानी कि उसकी जो smell है वो irritating odors रहता है. ठीक है, और जो higher homogeneous जो है they are colorless, और जिसकी ओडर कुछ भी नहीं होती, ओडरलेस वैक्स जैसे कि सॉलिड्स. ठीक है, और हैव लो वोलेटिलिटी. ठीक है, और उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स है ऑफ लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड उसकी लोअर रहती है. ओके, सो नेक्स्ट जो है यू कैन सी द टेबल नंबर इन द पेज नंबर 265, टेबल नंबर 12.5, रेफर दिस टू नो दी. So carboxylic acid have higher boiling points than those of alkanes, ethers and alcohols, aldehydes and ketones of comparable masses. ठीक है, as you can see in the table number 12.6 जो कि पेज नंबर 266 है, इसमें बताया गया है, जैसे कि आप लोग देख लो, जो कंपाउंड्स फैमिली से बिलोंग करते हैं जैसे अल्केन हो गया, ईथर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एंड अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, these are going to boiling point of these compounds, they are going to be highest, यानी कि इनका जो boiling point है it goes on increasing. ठीक है, and also the molecular mass of these compounds are increases. As you can see, the strength of intermolecular forces also increases. Okay, so next जो है in this carboxylic acid, see the reason is जो कंपेरेबल masses है कीटोन्स और एल्डिहाइड्स के, जैसे कि अल्केन, ईथर्स, अल्कोहल्स जो एसिड है, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स जो है गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वेल एज देयर molecular mass also increasing and the strength of intermolecular also increasing. The reason is that in the liquid phase the carboxylic acid forms dimer, जिसमें two molecules dimer यानी कि dimer में क्या होता है, two molecules they are held by two hydrogen bonds. ठीक है, so acid hydrogen of one molecule form hydrogen bond with the carbonyl oxygen of the other molecule. So this double bond
the size of the molecule जो है it resulting in the increasing in intermolecular van der Waals forces which in turn the result in high boiling point. ठीक है. So refer to know more about this 12.6 table number and page number 266. And next is solubility of carboxylic acid in water decreases with increase in molecular mass. जैसे molecular mass carboxylic acid की increase होते जाएंगे वैसे water जो water में solubility है उसकी क्या हो जाती है decrease होते जाती है. ठीक है. In the higher carboxylic acid are practically insoluble in water because the increase in hydrophobic यानी कि water heating. See here, the higher carboxylic acids they are insoluble in water because the increasing hydrophobic यानी कि water heating increase होते जाएगा यानी कि वहाँ पर water molecule presence नहीं होगा तो interaction of hydrocarbon that वो क्या हो जाएगा increase हो जाएगा यानी कि जो interaction of this hydrocarbon part with water वो क्या हो जाता है increase होते जाएगा. Okay. सो हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटिंग यानी कि पानी को न पसंद करने वाला चीज समझ में आया हाइड्रोफोबिक. ठीक है. So this is about the one more thing that you have to know. Water insoluble carboxylic acids are soluble in less polar organic solvent जैसे कि ether हो गया alcohol हो गया benzene हो गया and so on. There are many solvents in organic solvents are there which are soluble in these. Okay. And those carboxylic acid soluble होते हैं जो कि insoluble होते हैं water में. ठीक है. So let's see the chemical properties of these aldehydes, ketones as well as carboxylic acid. Okay. So you can see here जो chemical properties है उनमें से कुछ chemical laboratory test आएंगे. ठीक है. See here aldehydes और ketones जो है इससे पहले we have seen the physical properties ये दिखता कैसे है ये इसकी solubility इसका boiling point everything we have seen. Now in chemically what these are having the properties knowing the by taking the test of this in the laboratory of these aldehydes and ketones जैसे कि there are many tests are there. First these aldehydes are easily oxidized to carboxylic acids. So they act as a reducing agent towards the mild oxidizing agents. Okay. So ketones do not have hydrogen atom directly attached to carbonyl carbon. So hence they are not oxidized to mild oxidizing agents. So on the basis of this difference in the reactivity, so aldehydes and ketones are distinguished by these tests. सबसे पहले test are only for these tests are only for the aldehydes. Later we'll see the for ketones test. Okay. So first Schiff's test है. Schiff's test क्या होता है? See what happens here when alcoholic solution of this aldehyde it is treated with the few drops of Schiff's reagent. ठीक है. कुछ drops of Schiff's reagent से हम लोग क्या करेंगे alcoholic solution of this aldehydes को अगर वो डालेंगे तो it gives the पिंक और रेड या फिर मेजेंडा कलर इट अपीयर्स. ये क्या कंफर्म करता है it gives the it confirms the presence of aldehyde यानी कि CHO group in the solution. Okay. So this is about this Schiff test to test the confirmation of the aldehyde functional group is present or there or not in the compound. Okay. So next one is tolerance test या फिर इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं यानी कि टेस्ट ट्यूब में जब ये रिएजेंट को बॉईल करेंगे एल्डिहाइड के साथ एक उसके ऊपर जो है इसका एक मिरर फॉर्म होता है सिल्वर मिरर फॉर्म होता है सिल्वर फॉर्म का. ठीक है. दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ दिस एल्डिहाइड. ओके. सो व्हाट हैपेंस हियर व्हेन an aldehyde is boiled with the tolerance reagent यानी कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रहता है जिसको हम टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं. जब क्या हो जाता है सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड. सो यहाँ पर क्या हो जाता है aldehyde is oxidized to carboxylate ion by this tolerance reagent and Ag plus ion is reduced to Ag. Okay. So it is the test for one more test for presence of the to test the presence of aldehydes or not. Okay. So next one is a Felling test. See these questions are very important while you while asking in the viva. These are very important. So please note these
टेस्ट. ओके, फिलिंग टेस्ट में क्या होता है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एन एल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड एंड फिलिंग सॉल्यूशन जो है और एल्डिहाइड को क्या करते हैं, बॉईल किया जाता है इन हॉट वाटर. सो वहां पर क्या हो जाता है, a red precipitate of cuprous oxide is formed. वहाँ क्या हो जाता है, रेड precipitate of which means insoluble uh, solution is formed when the aldehyde with filling solution is boiled in hot water. Okay, cuprous oxide is formed. So यहाँ पर an aldehyde is oxidized to carboxylate ion by this filling solution and यहाँ पर Cu plus 2 ion जो है वो reduce हो जाता है Cu plus ion. Okay. So this is one more test about for the confirmation of the presence of aldehyde or not. Okay. So these are the three chemical laboratory tests for the confirmation of this aldehydes. Okay. So next one is the chemical reactions of aldehyde and ketones with the nucleophile. Okay. So in that nucleophile जो सबसे पहले HCN यानी कि साइनाइड ग्रुप के साथ देखते हैं. सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड हियर एक अल्डिहाइड ग्रुप पे जब या फिर कीटोन ग्रुप पे, यही दिस इज द कीटोन, जब हाइड्रोजन साइनाइड एडिशन होगा तो वहाँ क्या फॉर्म हो जाता है और वो क्या देगा वो भी देखते हैं. ठीक, सबसे पहले here you can see the addition of this hydrogen cyanide. In this what happens, this hydrogen cyanide जो है, this is the hydrogen cyanide and this is ketone. So यहाँ पर this hydrogen cyanide which is a weak acid, it adds across the carbon oxygen double bond in aldehydes and ketones to produce the compound जिसको हम बोलते हैं cyanohydrins. This cyanohydrin, what is cyanohydrins? If anybody asks you in the viva or in the question paper, if you get this type of question, so answer this, okay, with this reaction. Hydrogen cyanide adds across with the carbon oxygen double bond in the aldehyde or ketone. It produces cyanohydrins. Okay. So this is the one reaction, and example for you can see in the instead of ketone we have taken this acetone as well as aldehyde for acetaldehyde. Okay, so acetone with hydrogen cyanide, which is a weak acid, it gives the acetone cyanohydrin. This is for ketone example, and this is for acetaldehyde is aldehyde example. It gives acetaldehyde cyanohydrin. Okay, so this is the one kind of chemical reaction of ketones as well as aldehydes. Okay, so let's see the next kind, that is sodium bisulfate NaHSO3. Okay, so here you can see in this type of reaction यहाँ पर aldehyde या फिर ketones ले लो, वो react करता है saturated aqueous solution of sodium bisulfate. It gives crystalline precipitate. ये क्या देगा, एक क्रिस्टलीन प्रेसिपिटेट देगा जो कि सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट, ठीक है, यानी कि एक एडिशन प्रोडक्ट देगा. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देख लो, सी हियर एसीटोन एग्जांपल है एज वेल एज अल्डिहाइड भी एग्जांपल है. In case of aldehyde, the product is acetaldehyde sodium bisulfate adduct. In case of acetone, you will get acetone sodium bisulfite adduct. Okay, so this is the second chemical reaction of aldehyde and ketone. And third reaction is addition of alcohols. It has two steps reaction. In this what happens, aldehydes when react with one molecule of anhydrous, this is the anhydrous monohydric alcohol in the presence of dry hydrogen chloride, which is HCl, to give alkoxy alcohol, that is known as hemiacetal, which is further hemiacetal milega. Then again in the step 2, it is further react with one or more molecule of anhydrous monohydric alcohol to give geminal dialkoxy compound, that is known as acetal. You can see here in this reaction. Okay, so these are about the chemical reaction of acetone, ketone as well as aldehyde. Okay, so in the next video we'll see the one more reaction is there, that is the nucleophilic addition
elimination of aldehydes and ketones with ammonia derivatives. That is called a Schiff's base reagent बोला जाता है ठीक है. So that's it about today. We'll see in the next video जो कि important है aldol reaction, aldol condensation reaction है, cross aldol condensation reaction है. That is the last part रहेगा ठीक है. और there are many reactions are there which are important that might become in your first semester exam okay. So that's it for today students. Thank you so much. We'll see you in the next video. Okay, thank you.